सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार साथियों, परिष्कार परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रीति और आज हम फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हो चुके हैं लेके मॉडल पेपर 2, जो कि है आरबीएसई का मॉडल पेपर, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में कि किस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन पेपर आने वाला है और किस तरीके से आपको उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है। तो एक पेपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज हम करने जा रहे हैं मॉडल पेपर नंबर 2। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा इंग्लिश का मॉडल पेपर नंबर 2। ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 80 नंबर का आपके सामने क्वेश्चन पेपर आने वाला है और उसमें जिसमें कि कुछ आपके चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे। बाकी 4 सेक्शंस में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड होगा, सेक्शन ए, बी, सी एंड डी। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है। पहला क्वेश्चन सेक्शन ए जो होगा वो होगा रीडिंग सेक्शन, जिसमें आपके पास में आएंगे 2 कॉम्प्रीहेंशन। फर्स्ट कॉम्प्रीहेंशन में आपके पास में 9 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो एक नंबर के होंगे। सेकंड कॉम्प्रीहेंशन में आपके सामने 6 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि अगेन एक मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन ए का हम लोग देखते हैं। तो कॉम्प्रीहेंशन को जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्प्रीहेंशन को पहले आपको क्या करना है, बहुत ही डिटेल में उसको पढ़ लेना है, डीपली पढ़ लेना है, एनालाइज कर लेना है। उसके बाद में आपको उसके आंसर सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आपको लगे कि आपको आंसर इस लाइन में से मिल सकता है तो कंप्लीट लाइन को दोबारा सा पढ़े, उसके बाद में आप उसके आंसर्स देना शुरू करें। तो ये एक पैराग्राफ है हमारे सामने, एक कॉम्प्रीहेंशन है जो कि रिलेटेड है किससे, गांधी जी से रिलेटेड है। गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा देवी से रिलेटेड है और कस्तूरबा देवी जो कि जिनको काफी एक प्रॉब्लम, एक मेडिकल इश्यू जो हो गया था और उसका एक एक्सट्रैक्ट है जो कि यहाँ पे दिया गया है कि कैसे कस्तूरबा गांधी ने बहुत ही पेन सफर किया, पेन में उन्होंने अपना टाइम और कैसे वंडरफुल ब्रेवरी के साथ में उन्होंने वो पेन को फेस किया। ये सब चीजें हैं इस कॉम्प्रीहेंशन में, तो इसका जस्ट यही है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखते हैं कि कैसे आपके सामने क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड गांधी जी's वाइफ एस्केप डेथ थ्रू सीरियस इलनेस फॉर द फर्स्ट टाइम। कब उनको सीरियस इलनेस से, कब वो उनको मुक्ति मिली, कब सीरियस इलनेस से मुक्ति मिली गांधी जी की वाइफ को, जो कि जिनका नाम क्या है, कस्तूरबा बाई। तो क्या होगा, आफ्टर सत्याग्रह, ड्यूरिंग सत्याग्रह, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सत्याग्रह, नन ऑफ द अबाउट। तो ये आपको कब समझ में आएगा, जब आप बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डीपली आप अनसीन पैसेज को पढ़ लेंगे। तो क्या है इसका आंसर, ड्यूरिंग सत्याग्रह। What was the condition of Kasturbai at the second home when she escaped death? क्या कंडीशन थी उनकी? She was too strong to sit up in bed. She was too weak to sit up in sofa. Became unconscious forever. Too weak to sit up on bed. क्या होगा इसका आंसर? She was too weak to sit up on bed. Next question is, what did the doctor want to give Kasturbai when her condition become worsen? डॉक्टर ने क्या उनको देने का बताया या फिर सजेस्ट किया कि उनको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, जब वो बहुत ही उनकी कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी। बीफ एंड मिंट टी, बीफ टी ओनली, मिंट कॉफी, नन ऑफ दीज। बीफ टी ओनली, उनको बीफ टी सजेस्ट किया डॉक्टर ने कि आपको सिर्फ यही पीना है। टू सेव द पेशेंट्स लाइफ, अ डॉक्टर में डिसीव हिज पेशेंट रिलेटिव बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। ये आपको बताना है, आप जब कॉम्प्रीहेंशन पढ़ लेंगे उसके बाद में, तो डॉक्टर, एक अच्छे डॉक्टर को पेशेंट्स और रिलेटिव्स इसका आंसर होगा, बोथ। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑपोजिट्स टू नॉट अचीविंग व्हाट यू वांटेड। हियर इट इज व्हाट यू वांटेड। क्या होगा, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग अपोजिट टू नॉट अचीविंग व्हाट यू वांटेड। जो आपको चाहिए वो नहीं मिल रहा हो, उसका अपोजिट हमें बताना है। अनसक्सेसफुल तो वही हो गया कि जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, ये तो सिनोनिम हो गया। मीनिंगफुल, सक्सेसफुल, वंडरफुल, व्हाट इट विल बी, इट विल बी सक्सेसफुल। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द सिनोनिम ऑफ फीलिंग ऑफ फियर और वरी। फीलिंग ऑफ फियर और वरी के लिए सिनोनिम हमें चूज करना है, दैट इज एंजाइटी। Read the following passage carefully and answer the questions that follow.
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैराग्राफ हमारे पास में आ गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ रिलेटेड है किससे, विनर से रिलेटेड है कि विनर्स को कैसे, किस तरीके का वो किस तरीके से उनके पास में कैसे वो एक स्ट्रेंथ को गेन करते हैं, विन करके क्या क्या उनके स्ट्रगल्स होते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये उससे रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन है और इसके क्वेश्चंस किस तरीके से आने वाले हैं। व्हाट इज स्ट्रेस, ये पूरा का पूरा जो आपका कॉम्प्रिहेंशन है वो रिलेटेड है, डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पे कर रहा है, स्ट्रेस पे, और कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट की जाती है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाएगा, इस चीज़ से भी रिलेटेड है। तो व्हाट इज स्ट्रेस एज पर द पर्टिकुलर पैराग्राफ, क्या होगा, स्ट्रेस इज अ बॉडी रिएक्शन टू एनी डिमांड्स और चेंजेस इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो बॉडी में जो चेंज आते हैं उसको स्ट्रेस कहा जाता है, और बॉडी का जो रिएक्शन होता है उसे स्ट्रेस कहा जाता है। व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो रिकॉग्नाइज की जानी चाहिए। द साइन ऑफ स्ट्रेस शुड बी रिकॉग्नाइज, साइन ऑफ स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेस के साइन होते हैं उनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। व्हाट साइंस अपीयर इन स्ट्रेस्ड पर्सन, क्या साइन होते हैं स्ट्रेस पर्सन में। सम साइंस आर मसल टेंशन, पैल्पिटेशन, हाई ब्लड प्रेशर, इंडाइजेशन, हाइपर एसिडिटी, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर एटसेट्रा। ये कुछ साइंस हैं जो कि स्ट्रेस्ड पर्सन का शो करते हैं कि ये पर्सन क्या है, बहुत ही स्ट्रेस्ड है। व्हाट फैक्टर्स लीड टू स्ट्रेस, कौन से फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेस को लीड करते हैं, लेके आते हैं, बनाते हैं। अ चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सच एज टेम्परेचर, पॉल्यूटेंट्स, ह्यूमिडिटी एंड वर्किंग कंडीशन लीड्स टू स्ट्रेस। इस चीज को ज्यादा बढ़ावा दे देते हैं, स्ट्रेस को ज्यादा बढ़ावा दे देते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे कि क्या हो सकता है आपका, टेम्परेचर हो सकता है, पॉल्यूटेंट्स, ह्यूमिडिटी, वर्किंग कंडीशंस लीड्स टू स्ट्रेस, ये सब चीजें हो सकती हैं। व्हाट इज साइको सोशल स्ट्रेस, साइको सोशल स्ट्रेस क्या होती है। साइको सोशल स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ लैगिंग बिहाइंड ऑफ अ पर्सन इन द सोसाइटी। क्या होती है, साइको सोशल स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ लैगिंग बिहाइंड ऑफ अ पर्सन इन द सोसाइटी। दिस इज नाउ वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन ए। सेक्शन ए हमने दो कॉम्प्रिहेंशन कंप्लीट कर लिए। नाउ सेक्शन बी जो कि है राइटिंग स्किल से रिलेटेड, तो इसमें कुछ आपको लेटर्स आने वाले हैं, एडवर्टीजमेंट्स आने वाले हैं, नोटिस आएगा, रिपोर्ट आएगा, ट्रांसलेशन आएगा, ये सब क्या होगा आपका राइटिंग से रिलेटेड पार्ट होगा। तो सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू आर मिस्टर अजय नागर, राइट एन इनफॉर्मल रिस्पॉन्स एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन बाय मिस्टर दिनेश राजपूत of one of your friends, Suraj, the son of Mr. Dinesh Rajput, have come back to India from America after finishing his MBBS. There is a celebration at his residence on 3rd March 2023 at 7 PM. क्या है कि ये एक सेलिब्रेशन दिया जा रहा है जिसका इनविटेशन मिला है आपको, और आपको उनको थैंक यू बोलना है कि आपने, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपने सेलिब्रेशन में इनवाइट किया। तो ये चीज़ हमें करनी है। तो क्या होगा, कैसे हम लिखेंगे थैंक यू नोट या थैंक यू रेस्पॉन्स कैसे देंगे। सबसे पहले हम अपना एड्रेस देंगे, ठीक है, डेट डालेंगे 1 मार्च, हम किसको एड्रेस कर रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, डियर दिनेश शर्मा, accept my congratulations on completing MBBS by your son. I am extremely glad to receive your invitation. I remember how excited you have been to see this day. I will definitely come with my family to attend the party on 3rd March. My best wishes to Suraj. Yours sincerely, Ajay Nagar. Okay, this is how you will write your response to invitation. Next is Reshma School St. Teresa Senior Secondary School is organizing a debate competition. Draft a notice as cultural secretary of your school student union. आप क्या है कल्चरल सेक्रेटरी, स्कूल यूनियन के कल्चरल सेक्रेटरी हैं। आपको एक नोटिस लिखना है कि आपका स्कूल क्या कर रहा है, डिबेट ऑर्गेनाइजेशन करवा रहा है, कंपटीशन कर रहा है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आप अपनी नोटिस का। तो नोटिस का आपको पता है कि सबसे पहले यू विल राइट योर स्कूल्स नेम, देन यू विल राइट द डेट, एंड देन राइटिंग नोटिस इज मैंडेटरी। और डिबेट कंपटीशन, ठीक है, आपने टॉपिक दे दिया कि डिबेट कंपटीशन है, और डिबेट विल टेक प्लेस ऑन 8th Jan 2023 इन मल्टीपर्पज हॉल ऑफ आवर स्कूल at 12 PM. The subject for the debate is the democracy of India. Those who are interested in taking part in the debate, school
see the undersigned on or before 5th Jan 2023. All are requested to attend the debate. Reshma, Secretary, Cultural Society. So this is how you will write a notice. Next question is, your school organized an exhibition cum sale of items prepared under work experience certificate by your school students. There was an overwhelming response from the public. Prepare a report in 100 to 125 words for a local daily. You are the coordinator, SUPW activities, नीता स्कूल गुड़गांव. आप क्या है, कोऑर्डिनेटर हैं. आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है, ठीक है, कि रिस्पॉन्स स्टूडेंट की रिस्पॉन्स कैसा था उससे रिलेटेड. तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट यू विल राइट योर टॉपिक हेडिंग, फिर बाई ABC जो भी आपका नाम होगा वो कोऑर्डिनेटर SUPW एक्टिविटीज नीता स्कूल गुड़गांव. Then you will write the date and then you will give your report by including all the important details and not excluding all the irrelevant items. जो भी irrelevant चीज़ें होंगी उनको हटा के जो भी relevant चीज़ें होंगी वो आप उसमें include करेंगे. तो इस तरीके से आप नोटिस को prepare करेंगे. This is the format of writing any kind of report. ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज. आपको कल एक पैसेज करवाया जा चुका है कि कंप्लीट आपको सामने एक पैसेज आने वाला है, उसको आपको कंप्लीटली टोटल उसमें आपको इसको ट्रांसलेट करना है. जैसे ये एक पैसेज आ गया है, इस तरीके से आपको एक पैसेज मिलेगा और आपको टोटली उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा, ठीक है. तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इमेजिन यू आर अरविंद लिविंग एट मानसरोवर जयपुर. राइट अ लेटर टू द कस्टमर सर्विस मैनेजर शेर इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंप्लेनिंग अबाउट अ डिफेक्टिव इन द रेफ्रिजरेटर परचेज फ्रॉम योर स्टोर. फ्रॉम दैट स्टोर आपने कोई रेफ्रिजरेटर परचेज किया, फ्रिज परचेज किया जो कि डिफेक्टेड आ गया, आपको कंप्लेंट लेटर करना है. यही सेम चीज़ हम डिफेक्टिव आइटम के लिए हम लास्ट वाले जो मॉडल पेपर है उसमें भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से आपको लेटर लिखना है. तो क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, देन आप जो कंपनी को लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखेंगे, आप सब्जेक्ट जरूर लिखेंगे. कंप्लेन रिगार्डिंग द डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर, आप क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं. तो डियर सर आई बॉट ए रेफ्रिजरेटर, आप ये बताएंगे कि हमने रेफ्रिजरेटर कहाँ खरीदा था. 2 years की उसमें वारंटी थी, बट 8 months के अंदर अंदर ही क्या हो गया, वो पूरा का पूरा खराब हो गया. स्टार्टेड ट्रबलिंग मी फॉर अ मंथ, इट्स ड्रायर हैज नॉट बीन फंक्शनिंग एंड प्रॉपरली. सम ऑफ द डिफेक्ट्स आर, आप डिफेक्ट्स की डिटेल बताएंगे कि वाटर डिस्पेंसर इज नॉट वर्किंग, कंप्रेसर इज मेकिंग टू मच नॉइज, बॉडी इज गेटिंग टू हॉट. ये सब चीज़ें आप डिटेल में उनको बताएंगे ताकि वो आपकी हेल्प कर सकें. आई होप यू विल अंडरस्टैंड द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन एंड सेंड अ टेक्नीशियन टू rectify these defects or replace it soon. Yours faithfully, Arvind. ठीक है, ये हो गया. Next is job application. You have to write a job application for the post of English lecturer to the principal, Ryan International School, Mansarovar, Jaipur. You are Kavita living in Mansarovar, Jaipur. ठीक है, तो जॉब एप्लीकेशन में आपको CV या फिर आपको बायोडाटा रिज्यूम में आपको ऐड करना पड़ेगा. तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, प्लेस लिखेंगे, देन उसके बाद में यू विल राइट द डेट, द प्रिंसिपल रायन इंटरनेशनल स्कूल मानसरोवर, रायन इंटरनेशनल स्कूल मानसरोवर में आप दे रहे हैं. देन उसके बाद में आप यू विल राइट द सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लेक्चरर. ठीक है, इंग्लिश लेक्चरर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं. डियर सर, this is with the reference to your advertisement in the Rajasthan पत्रिका on May 18, 2023 for the post of an English lecturer. ये लाइन आपको ज़रूर याद रख लेनी है कि आपको अगर एडवर्टीजमेंट से देख के अगर जॉब एप्लीकेशन लिखनी है तो ये चीज़ आप ज़रूर लिख सकते हैं कि दिस इज़ विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट in the Rajasthan Patrika on May 18, 2023 for the post of an English lecturer. English lecturer की पोस्ट के लिए आप लिख रहे हैं और आपने राजस्थान पत्रिका से ये एडवर्टाइजमेंट देखा जो कि आया था 18 मार्च को. I have recently completed my B.Ed with the 70% marks both in theory and practical. Besides, I have been the gold medalist in MD University, Ajmer in 2009. At present, I am teaching at reputed coaching center. ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आप अपनी इसके अंदर बता देंगे. उसके बाद में आप क्या करेंगे, आई कैन इंश्योर यू माई बेस्ट सर्विसेज, आप लास्ट में उनको बताएंगे कि आई एम ऑल्सो एनक्लोजिंग माई करिकुलम वीटे जो कि होता है CV हेयर विद योर परसुअल.
ठीक है, योर्स फेथफुली कविता एंड क्लोज टू सीवी। अब सीवी में आप क्या करेंगे, सीवी में आप डिटेल एक टेबल फॉर्मेट में आप लिखेंगे ज़रूर। उसमें आप क्या करेंगे कि आपने जो भी आपका है डिटेल्स हैं, जैसे कि आपका नाम है, आपका ईमेल एड्रेस है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में सारी चीज़ें लिख देंगे। फिर आपने 12th आपने अभी रिसेंटली क्या कर रहे हैं, कौन कौन से एग्जामिनेशंस आपने क्लियर कर लिए हैं, कौन कौन से एग्जामिनेशंस में आप परसू कर रहे हैं, 12th है, 10th है, ये सब बोर्ड्स हैं, बीए हैं, एमए हैं, ये सब चीज़ों की डिटेल्स आप विद परसेंटेज आप बताएंगे ताकि उनको पता चले कि आप इस पोस्ट के लिए हैं कि नहीं है। ठीक है, तो ये सीवी आप सीवी में ये सब चीज़ें अटैच जरूर करके लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द कनेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। सुरेश इज लेट। नाउ दिस इज सेक्शन सी, वी आर मूविंग टुवर्ड सेक्शन सी। सेक्शन सी है हमारे साथ में सामने। द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द कनेक्टिव्स, हमें कनेक्टिव्स यूज करके सेंटेंस को एक बनाना है, सिंपल सेंटेंस में ट्रांसलेट करना है। सुरेश इज लेट, द टीचर वांट्स टू नो द रीजन। तो इसका क्या होगा, द टीचर वांट्स टू नो द रीजन वाई सुरेश इज लेट। वाई से ऐड करना है हमें। अ गर्ल हैज रिटन दिस लेटर टू योर सेलेक्टेड हर whom। तो क्या होगा, अ गर्ल whom you selected has written this letter। दिस इज द राइट आंसर। कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसलेट करना है हमें, शी इज वेरी स्मार्ट, शी नोज इट। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होगा, शी इज वेरी स्मार्ट एंड शी नोज इट। He brought a pen, it was very nice। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, he brought a pen which was very nice। The headmaster assured me to the issue of fee। क्या होगा, turn over या turn on, to turn over the issue of fee। What time does your father in the morning, turn up, get up होगा। ठीक है, get up in the morning। What is the time your watch, by your watch। ठीक है, what is the time by your watch, आपके वॉच के अकॉर्डिंग क्या टाइम हुआ है। अनिल is fond sweets and toffees of। ठीक है, the next question is rat trap पे से आपके सामने एक कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, रैट ट्रैप का एक जो आपकी चैप्टर दिया हुआ है उसका एक कॉम्प्रिहेंशन लिया गया, आपके टेक्स्ट में से लिया गया, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। व्हाट डज मुकेश लुक फॉरवर्ड टू बिकम। मुकेश लुक फॉरवर्ड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। वेयर डज मुकेश लिव, what it is famous for। मुकेश lives in Firozabad, he is famous for its bangles। what is the occupation of every other family in Firozabad। the occupation of every other family in the Firozabad is making bangles। where have the families spent their generations। the families have spent their generation working around furnaces, welding glass, making bangles for all women। find the word from the passage which means says emphatically। it means announce, find the word from the passage which is opposite to breaking, welding। next question is you have to give answers of these questions in 80 words related to your textbooks and your chapters। why do you think Gandhi considered the Champaran now this is section D related to your literature and your prescribed textbooks। so the first question is why do you think Gandhi considered the Champaran episode to be the turning point of his life। from Indigo, the Champaran episode showed him that the people of India could win freedom for themselves by following truth and non-violence। Gandhiji and his way of working had succeeded। He declared that the British could not order him about in his own country। He has every right to say his problems। He, with help of other people, can win the battle against the opposers। So it was a turning point in his life। Why were the journalists and the publishers puzzled at the success of Umberto's novel The Name of the Rose। the journalists and the publishers have a different view about the reading experience of people। they say that people like to have easy reading experience, but ego believes that there are also people who like difficult reading experience। this novel, which was serious in nature, had a difficult reading experience। this was liked by the people and this was a surprising feature for them।
Next question, we will have to write this answer in 20 to 25 words. How did the author start learning swimming? How did the author start learning swimming? The author learned to exhale with face underwater. He overcome his fear. He paddled in the water and learned swimming. This is how he learned the swimming. Next question is, what were the opposition that Sophie was dreaming of? Why does Jenny discouraged her from having such dreams? This is from Going Places. Sophie dreamed of having a boutique in the city. In order to save money for the boutique, she dreamed to becoming a manager, a fashion designer or an actress. Jessie discouraged her because they were wild too impossible and she had no means or skills. So, this is the answer. Next question is, there is a poem from your text and there is a stanza and we will have to write the explanation, reference to context of that particular stanza. And such are daffodils, with a green word they live, and clear rills that for themselves a cooling covert makes, gains and hosts season, the mid-forest break, rich with sprinkling of fair musk, rose blooms. A reference, क्या होगा इसमें? reference, context and explanation. These lines have been taken from John Keats' poem A Thing of Beauty. The poem recounts the beautiful thing from the world of nature. He has already pointed out the blessings that are provided by the beautiful objects. Explanation is, among the beautiful objects of nature are the sun, the moon and the trees, which sprout new leaves and give cool shade to the innocent sheep. Similarly, there are yellow daffodils in the midst of greenery. Also, there are rivers of clear water that grow thick undergrowth on their banks to keep themselves cool in the hot season. Then there is a thick mass of fern in the middle of the forest that bears sweet smelling musk rose. So, this is the explanation of that particular stanza. The next stanza is, the hurt to the scene wouldn't be my complaint so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Here far from the curve we make our roadside stand and ask for some city money to fill in hand to it if it will not make our being expand. A reference, context and explanation. References, these lines have been taken from the Robert Frost poem A Roadside Stand. The poem context is, the poem brings out the pain and sufferings of the poor villagers who try to earn some money by selling their product at the roadside stands. Explanation is, the poet says that so-called injury to the landscape caused by the sign borders of the stand keepers is not of much concern of him. What worries him is the sorrow of the villagers about which no one talks and no one understands. The stand keeper puts up his stand in the place that is far from the city. He wants to earn some money by selling his goods and passing city people. He wants to raise a little his standards to living with the money he earned. He wants to live the comfortable life as shown in the films and promised by the party in the power. Thus, he wants to improve his financial conditions. Next question is, answer the following question is about 80 words. Write a brief summary of the poem Keeping Quiet in your own word. Keeping Quiet is a poem. We have to write a summary of the poem. The poem emphasizes the importance of keeping quiet and doing nothing for the short duration. This will give us the opportunity to think over our activities, reassess them and correct them. This will also bring about a huge silence. This silence will interrupt our sadness, which is born of never understanding ourselves and of endangering our lives. This will also lead to the renewal of our lives like that of the earth, which gets rewound in spring. The poem Aunt Jennifer's Tiger portrays male tyranny in the society. Explain this idea, Aunt Jennifer's Tiger. Ours is a male-dominated society. Aunt Jennifer is a typical housewife. She has to follow her husband's order slavishly.
Her husband dominates her and she has accepted her fate submissively. However, she tries to ease her situation by expressing her innermost feeling through the art of embroidery. She wishes to get for herself the very qualities that tigers stand for. She wishes to be bold, proud and fearless like the tigers she has created in her curtains. Next question is, we have to answer this question in 20 to 25 words. Why are the young trees described as sprinting? My mother at 60. While the poetess was driving, she looked out the trees along the roadside. She found them running past. It implies that youth passes very quickly. What message does the poet convey through this poem? An elementary school classroom in a slum. The poem An Elementary Classroom in a Slum is a pitiful condition of slum school children, with emphasis on access to knowledge and real world with contribution of government and civilized society. He wants these children to have access to book because only those who get the light of knowledge make history. Answer the following question in 80 words. What do you infer from the Sam's letter to Clary, the third level? From Sam's letter to Clary, Charlie, two inferences can be made. Firstly, it was Charlie's imagination. Charlie found Sam's letter in his grandfather's first day covers. It has a postmark dated 18 July 1894. It was posted to his grandfather at his Galesburg address, but the paper inside was returned to Charlie by Sam. Secondly, Sam too had his dreams. He was infected by the descriptions for Galesburg given by Charlie. He too wanted to live in the small town like Galesburg. He too made it means of escape. Between the above two, the first conclusion seems more appropriate. In what way did Zitkal Asa rebel to save her hair from being singled? Memories of childhood. The narrator disappeared unnoticed. She crawled under a bed and hid herself in the dark corner. She was soon found out by women and girls. She kicked and scratched them when they were trying to drag her from the corner. She resisted wildly. No one came forward to help her. She was tied to a chair. She tried to move her head side by side. Ultimately, she failed and her hair was cut. Who was the Tiger King? Why did he get that name? The Maharaja of Pratibhanandapuram is the tiger of king. At the time of his birth, royal astrologer predict his death caused by a tiger on growing up. He haunts 99 tigers. For killing so many tigers, he gets his name. What were the common features of all the stories told by Jack? Jack was a perfect storyteller. He tells a basic tale to his daughter. He changes his names for the character. He initiates the characters to keep the interest alive. Sometimes he checks the attention of his daughter by telling her wrong things. He tries to maintain the interest. Choose the correct alternative. In 10 years, the Maharaja killed about dash tigers. How many tigers? 10, 50, 70, 80, 70 tigers. Next question is, the Gondwana, the animals found were mammoths, dinosaur, both A and B, none of these. And mammoths and dinosaur both were found in Gondwana land. The word written on the cap of the soldier were US Navy, US Army, US Air Force, none of these. US Navy. The wise old owl sent Rogers, shrunk, get help to Joe, a wizard, a squirrel, a jack, a wizard. What did Mr. Lamb use to make jelly? Crab apples, oranges, mangoes, pears. Crab apples. Jackson was the senior prison officer of doing, sieving, eaving or aving. He was the senior prisoner officer of deaving. So this is how the paper is. इस तरीके का पेपर आपके सामने आने वाला है
और आप बहुत अच्छे से इसको अटेम्प्ट करेंगे। आपको बहुत आइडिया लग गया है कि किस तरीके से आपको आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। तो आई होप कि बहुत अच्छा आपको इसमें हेल्प मिलेगी। दोनों जो भी मॉडल पेपर, दोनों मॉडल पेपर 1 एंड 2 मॉडल पेपर दोनों में आपको अच्छे से आप इसको प्रिपेयर करके देख के और आंसर राइटिंग कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।